not even me, all the crew and everyone was like, oh God, like Sikandar is so popular in South Africa. And कोई Instagram पे tag कर देता ना कभी कभी clippings पुरानी, तो मैं देखता हूँ shit, this was me. जितना मैंने दिया है उसको show को, बहुत दिया है, वो उतना ही show ने मुझे वापस दिया है. Hi, my name is Mohit Malik and you're watching me on Radio City India. Hello friends, welcome to Radio City. Today we have with us the dynamic and very multi-talented personality Mohit Malik. He has treated us with iconic characters throughout the years, and apart from iconic characters that he's played, he's also been on Nach Baliye, he's been on Fear Factor, so someone who likes to dabble into everything. Now, what makes you such a risk taker? Okay, first of all, thank you so much, Shlok, for having me over and for the wonderful introduction. See, risk is a part of life here, I feel, and as an actor, I think risk लेना बहुत ज़रूरी है हर किसी को. So that's why I tried my best here to play all the, I always, in fact, आगे भी, I make it a point that I try and play different characters as much as possible, as much characters as much different than me, and so that's what my journey is all about. And till now, whatever shows I've done, I think it's all, as you said, it's all about risk, and I've taken a lot of risk playing different kind of characters, be it negative or be it grey or be it completely positive, or dabbling with reality shows. So I've done a lot there. I've done, and my journey is still on, and I want to. There's a want और ज़्यादा बढ़ गई in fact now to play more characters and to do more stuff and to take risks more. Right. So I think I think the right way to put it would be that, I mean, my next question was going to be what keeps you, motivated. You've done so many things already, but what keeps you motivated to, still trying something new, trying something more, trying something different, because there are sometimes that people will just achieve a lot and do in multiple facets of life and they'll want to take a break. What makes you want to, keep going at it? Yeah, I think it's only because of the love of the craft. I think the amount of love I have for the craft, that keeps me going, and I want to reinvent myself as an actor again and again, explore myself as an actor again and again. And the journey never stops. You can never become an actor. You always keep on learning. You can never say that I've become an actor. Right. The journey keeps on going, and you keep on learning every day, and that's what I feel here. And so that's what keeps me going, because I think there's a lot to learn, and for all of us in whatever art we are in, there's a lot to learn for all of us, and it's infinite. It's actually, there's an infinity towards, we're heading towards infinity, but I feel that like it's been now 10 to 12 years I've been working as an actor, as a working actor, and I can say that past 5 years, I think that's where I realized that this is what I want to do in my life, and this is acting. Or when I actually fell in love with my craft. This happened 5 years back, not when I came to Bombay and when I started my work. So when the love, when you start loving something, I think it just keeps you going, and that's what has kept me going till now, and that's what will keep me going. It's only because of the love of the craft, and that's what I keep doing. I keep doing workshops. I keep working on myself, and I do shows. I be busy for 1 year. You live a character. Then what I do always is whenever I finish a show, I make sure that I do a workshop, and because there is एक guilt हमेशा से रहा है कि मैंने theatre नहीं किया, and because theatre क्या होता है आपको still it gives you a base of something to stand on, or to become an actor. I feel it's very important to have a base. So अब वो मुझे लगता है कि जब से मैंने मुझे जब से क्राफ्ट से प्यार हुआ है, आई थिंक मैं यही करता हूँ कि जब भी मेरा कोई शो ख़त्म होता है तो आई टेक अ ब्रेक, आई बिकम न्यूट्रल, एंड आई ट्राई टू डू एज मच वर्कशॉप्स एज आई कैन to reinvent myself, to unlearn a lot of stuff, because unlearning is a great part of, is the biggest part of learning, I feel. So yeah, I think hope that answers your question. Yeah, I guess it answers another question of mine, that how you manage to keep up the performances
because it's very important, as you said, unlearning, because you're playing a character, you're living that character, and that character becomes you. And in television, you live a character. It's not easy. Like people when say then you're doing a television show, or people sometimes say that it's a television show. He's a television actor. No, but I think actor is an actor, and I feel that it's very difficult to actually go there every day and to perform there every day. I mean, it depends on individual. Like if you really want to, how much you want to take from it. Like I have been somebody that I've taken my acting career as a riyaz, and television as a riyaz for me is because you go every day, you perform 4 to 5 scenes, and what else do you want? I mean, as an actor, आपको और क्या चाहिए? 4-5 scenes आप perform कर रहे हो, टाइम कम होता है मानता हूँ मैं, लेकिन आपको फेम मिलता है, आपको पैसा मिलता है, साथ ही साथ आपको जंग भी नहीं लगता है एज एन एक्टर, आप काम करते रहते हो तो इट जस्ट कीप्स यू गोइंग. सो आई थिंक TV is a great medium to be in, and I am very proud of wherever I am today, and very proud of it, of television, of Indian television, and I want to say thank you that for my bread and butter, आज जो भी मैं हूँ, आज जो भी मेरे पास है, it's all because of television. Yeah, you made a very important point that television is a very important part of our entertainment industry. And अगर आप देखा जाए access की बात करो तो ज़्यादा लोग के पास television का ही access है. Now of course OTT के बाद and access काफ़ी बढ़ गया है, but when you see major chunk में movies देखने जाना फिर भी एक event होता था. TV आप हर रोज़ देख रहे हो. So as an audience, I'm a lot more connected to the television actor than a film actor, because this is the person I'm seeing every day. This is the person that is probably giving me my life lessons every day to whatever extent. Yeah, because you meet that character every day. The character comes and meet you every day, and that's the most interesting part. Right. Yeah. Right. I mean, you live with him. You live with the character. Like after a while, I think audience को समझ में आ जाता है after अगर कोई शो कोई देखना शुरू करता है, तो I think TV में ये होता है कि after 4-5 months the audience also comes to know that अब ये character इस moment पे क्या करेगा, अब इस situation पे क्या करेगा. They start resonating with you. They start living with you. That's the beautiful part. Right. So what out of all of your experiences, what do you enjoy more? Is it playing a character or being on being on a reality TV show? Character, obviously. Character. I'm an actor, yeah. So Achha, okay. I love to act more. Reality, like certain realities I wanted to be a part of, like Jhalak was one of them, and Fear Factor was one of them, and I did that. And जीता नहीं, final तक पहुंचा हूँ, लेकिन जीता नहीं. Podium finish था आपका? हाँ. Podium finish was second runner up, right? I was second runner. Yeah. I mean it's quite a देख के लगता है आसान काम नहीं है वो. मुझे भी लगता था, to be frank, but I don't know how it happened यार, how I did it I don't know, but मुझे भी बहुत डर लगता था. अभी भी मैं कभी कोई Instagram पे टैग कर देता ना, कभी क्लिपिंग्स पुरानी, तो मैं देखता हूँ, तो मैंने अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 महीने ही हुए हैं, बट मैं देखता हूँ, मैंने कहा शिट, दिस वाज मी. एंड आप पता नहीं उस मोमेंट पे इट्स ऑल अबाउट दैट मोमेंट. आप उस मोमेंट पे कैसे टैकल करते हो अपने फियर को. तो आप जब केप टाउन में हुआ था, राइट? सो वहाँ के फैंस के साथ आपने इंटरेक्ट किया. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? Yeah, I was first of all very surprised to see that that Kulfi was so popular there. Right. And not even me, all the crew and everyone was like, oh God, like Sikandar is so popular in South Africa. And वहाँ पे शो चल रहा था ऑन एयर. जब मैं गया था तो स्टार लाइफ वहाँ पे आता है, एंड वहाँ पे कुल्फी वाज ऑन एयर. So there are a lot of people. I mean, I was amazed. हम जब भी बाहर शूट कर रहे होते थे तो people used to see, and locals Cape Town में, so they were fan of the show, and they used to shooting के बीच में आ जाते थे कभी and but yeah, I mean that's the power of television, and that's the amount of love I received there. And मुझे कहीं ऐसा भी लगा कि मैं इंडिया में हूँ, केप टाउन में हो क्या, कि इतने ज़्यादा फैंस और इतने ज़्यादा कुल्फी, सिकंदर, एंड दे वर सिंगिंग सॉन्ग्स फ्रॉम द शो. इट्स ब्यूटीफुल यार. That's nice. And all thanks to television. Of course, yeah. Very wholesome kind of a moment it must have been for you, because the fact that you're able to communicate from Bombay to Cape Town through your craft. Man, मैं पहली बार श्लोक वहाँ पे ऐसा हुआ था, तो मैंने I called up my producer, like man, what we have done, what we have achieved is wonderful, and people out here so far from India, and और
काफ़ी टाइम मतलब हो गया है कुल्फ़ी को ख़त्म हुए अभी 3 साल हो गए हैं, 3 साढ़े 3 4 साल हो गए हैं। उसके बाद भी यू नो व्हेन पीपल कम एंड टेल यू इन फैक्ट वो तो साउथ अफ्रीका में तो थे ही, बट नाउ ऑल्सो लाइक इंडिया में भी स्टिल पीपल रिमेंबर द शो सो मच, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द शो ऑफ इंडियन टेलीविजन यार। और उस शो में एक्चुअली मेहनत भी बहुत ज़्यादा की थी यार वो, और वो जितना भी मतलब जितना मैंने दिया है उसको शो को, बहुत दिया है, वो उतना ही शो ने मुझे वापस दिया है। Kulfi Kumar and Dolly Armano की both are some like very iconic shows. Dolly Armano की मैं अपने negative character play किया था, and ITA and Gold Awards recognized you for that. So how was that experience for you? See, as I said, it's my job to play, and it's my love for the craft to play different kind of characters. And the best part about कि मैं कभी भी टाइपकास्ट नहीं हुआ। नॉर्मली क्या होता है ना टेलीविजन में, आपको होता है यार कि आप एक कैरेक्टर अगर 2-2.5 साल प्ले कर दो तो आपको वैसे ही किरदार के लिए ऑफर आनी शुरू हो जाती है कि यार ये तो यही अच्छा करता है। बट आई एम रियली ग्रेटफुल दैट पीपल रियलाइज दैट आई एम एन एक्टर and I can play characters. I am not the character what I'm playing, and so people realize that, and they gave me different characters. Like after Samrat, I played Sikandar. It's completely like North Pole, South Pole, and I was lucky to get that character. And I'm really grateful for the people who actually realize that that I can play, and actors in television can play characters. मतलब हमारे ये होता है ना कि टीवी में यार लगता है कि नहीं कैरेक्टर्स बहुत रिस्ट्रिक्ट हम होता है एक कि टीवी में कैरेक्टर्स बहुत बॉक्स्ड होते हैं। वो अब वो है चल रहा है बहुत टाइम से, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपने कैरेक्टर्स को बॉक्स ना बनाऊं, और उसको मैं जितना हो सकता है रियल रखूं, ऑर्गेनिक रखूं, और तो yeah, Dolly was a brilliant show. Dolly has given me a lot. I think it was a turning point in my career. I think people started to take notice that I can act, and that was a very difficult character to pull off, and very interesting. And I think that's one of my favorite characters till now. Right. Okay. Yeah. And most of the audience also, they still love the show यार। अभी भी मतलब लोग मुझे उसके clipping Instagram पे भेजते हैं, and people also come to me and tell me that that Samrat Singh Rathod. Yesterday only I went somewhere and last night somebody was telling me about the character कि आपने वो जो किया था बहुत अच्छा। मैंने कहा उसको 6 साल हो गए तो it's so fresh, still so fresh in people's memory, and that's fantastic. आपने तो कैरेक्टर प्ले करके आप निकल गए, लोग तो अब तक देख रहे हैं शो, people are still। और पता है वैसा कैरेक्टर आई थिंक टेलीविजन में आया भी नहीं है, एंड आई डोंट थिंक सो दैट पता नहीं, आई डोंट वांट टू से दैट कि मैंने वो प्ले किया, बट इतना बेहतरीन तरीके से वो लिखा भी नहीं गया है और निभाया भी नहीं गया है। जितना मैंने कोशिश करके अपनी जितनी मेरी एबिलिटी थी मैंने कोशिश करके उसको निभाया। बट या मैन दैट कैरेक्टर आई हैव नेवर सीन इन इंडियन टेलीविजन, और मैंने कहीं उस किरदार को देखा नहीं है। इतना रियल और ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, मतलब और वो strangely it's I don't see much of some similar characters like him. Right. So I guess you did answer my next question. What is your favorite character played by Mohit? No, but if you want to ask me, no, my favorite would be Sikandar Singh Gill. Okay. Yeah. My wife loves Samrat Singh Rathod a lot. उसका favorite है वो. But if you ask me, yes, I think it's going to be Sikandar Singh Gill there. Okay. करने को बहुत कुछ था, और बहुत इट वॉज अ कैरेक्टर जिसने मुझे मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। तो या एंड टुवर्ड्स द एंड आई हैड टू टेक हेल्प, आई हैड टू टेक साइकेट्रिक हेल्प, बिकॉज मेरी नींद उड़ गई थी यार। एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल एंड इट्स वेरी ह्यूमन टू एक्सपीरियंस दैट, बिकॉज आई फील अगर आप रोज़ 12 घंटे एक किरदार के थॉट्स में रहते हो, उसके इमोशंस में रहते हो, तो आपको कट ऑफ करना पॉसिबल नहीं है। मतलब a person like me who really gets into it, मैं मतलब I want to play a character, so I make sure that I'm playing that character, I'm playing those thoughts and I'm playing those emotions, and because I'm very honest with my work, so I know that मैं cut off तो कर ही नहीं सकता, तो वो cut off होना बंद हो गया था after a while. तो जो आप सोते हुए थे तो उसी किरदारों के साथ सो रहे हो, उसी किरदारों के विचारों के साथ सो रहे हो और उठ रहे हो, और देन इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर लाइफ, एंड बिकॉज जो भी उसकी लाइफ में सिकंदर की लाइफ में चल रहा था, देन आई वाज एक्सपीरियंसिंग इट इन माय लाइफ, एंड हैट्स ऑफ टू माय वाइफ हु हैज सफर्ड एंड सपोर्टेड मी थ्रू आउट.
सो बट यार इट मेक्स मी, मेरा फेवरेट इसलिए बनाता है क्योंकि वो टफ था एंड इट हैज़ गिवन मी अ हार्ड टाइम. सो एनीथिंग विच requires a lot of hard work from my end becomes my favorite. So yeah, I mean it's a very important way to look at it the way you are in terms of के आपको आपने recognize किया कि आपको psychiatric help लेनी पड़ेगी and like you know you took that help and that's the one of the most important things that you understood, you recognized that you know like आजकल we're talking a lot more about how your mental health and working on it is not a taboo. It's an important thing. It's a very important and that's why I mention it. So because you know people don't mention it यार. यानी जैसे आपकी physical health है वैसे आपकी mental health है यार. आपकी mental health भी खराब हो सकती है. तो there's no harm in taking psychiatric help and I have taken it because I was playing a very difficult character. It was very intense. So yeah, I mean and normally भी अगर आपको normally भी कभी ऐसा महसूस हो तो never shy away from taking help यार. Why do shy away from taking help? Right. I mean, I remember one time I was not going through a very good time in my life, and my dad told me like, you know, you should take some help. Like, it's very normal. तुमको पैर में जब लगी थी, तुम गए थे ना डॉक्टर के पास. And that's so sad. That's so, I mean, nice of your dad. Yes, of course. To actually to understand that. Normally, because see, we all belong to very orthodox families कहीं ना कहीं. Like मेरे parents को अभी भी like अब समझ में आने लग गई हैं चीज़ें. पहले नहीं थी इतनी समझ. I have told them, you know, कि ऐसा होता है. But पहले तो उनको लगता था नहीं काम कर ले ठीक हो जाएगा. कोई नहीं चल बाहर चल देना करने ठीक हो जाएगा. You know, so now they're changing. Now they are trying to, you know, पहले उनको इतनी समझ नहीं थी लेकिन अब समझ हो रही है. और मैं चाहता हूँ कि you know ये लोग जज नहीं करें. मैं ये मतलब हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, you know, कि अरे मेंटल हेल्प ले रहा है यार, क्या हो गया यार, ऐसा क्या हो गया, डिप्रेशन में हो गया, क्या हो गया यार, मेंटल हेल्प सेल्फ हेल्प ले रहा है तो there's no problem. Like I take help from my wife. I talk to her every day and that's my sanity, where my sanity comes from actually. You know, I trust me, मैं अगर मैं अपने रात को अपनी वाइफ से बात करके ना सोऊं तो मुझे नींद नहीं आती है. I have to talk to her. I have to tell her that you know this is going on in my head. I have to you know blabber out everything. I have to just dump everything out. And she's very sweet of her to, you know, to listen to it and you know and that's how you do it. I mean if you don't have somebody, please go to a doctor and you know, to talk to them. Yeah, of course. I guess एक चीज़ मेरे दिमाग में कब से चल रही है कि मैंने आपका जो भी like you know whatever you've done in the recent years, whatever I've followed, whatever I've read about, I can see one very something that I mentioned at the beginning of the interview. There is a great sense of risk taking and there is a want and there is like you know the desire to try new challenges, because one of the things that highlights it the most for me is that a year after becoming a father you've gone and done Fear Factor. You like you know that requires some amount of courage and like you said आप videos देख के अपने मैं ये सब कर रहा था. Right? Yeah. So yeah, you know what? It was just important for me to highlight that. But how has that experience been for you, becoming a father? Becoming a father is a wonderful experience. और मुझे अभी ऐसा लगता है कि मैंने पहले क्यों नहीं किया. To be very frank, because it's such a beautiful thing. Right. And हम कहते हैं ना कि बेटा हुआ है, but I think बेटा होता नहीं, आपको बाप होता है. और ये मेरे साथ बहुत सच्ची बात है क्योंकि I feel that I'm getting healed. और I mean, I've realized just lately, यार, I was performing, एक scene कर रहा था मैं अभी पीछे, I was shooting for a show, and so there are certain trigger points you have as an actor ना, आप अपने trigger points बना लेते हो कि इस emotion में जाने के लिए मेरा ये trigger point है, तो certain trigger points यार, it stopped working for me. Then I realized, अरे यार, ये तो healing हो रही है, मतलब मेरे personal life के जो issues थे और जो मेरे experiences या मेरे whatever you call it, तो वो experiences अब मुझे वो trigger points नहीं रहे हैं. They have been healed and I think that's only because of him. That amount of that जो void था ना अंदर, वो he has filled that void. And I think हर किसी के लिए important है. Like अब हम कभी pet लेके आते हैं अपने घर में, you know, तो you know the relationship which you develop with him is the same relationship. I think आपका पेट भी आपको कहीं ना कहीं void fill करता है, right? And that's why you feel better and आपकी healing हो जाती है कहीं ना कहीं. और that's what is happening right now. And I'm trust me, this is the most beautiful time of my life and spending time with him and playing with him and yeah, सबको करना चाहिए यार और जल्दी करना चाहिए मुझे लगता है क्योंकि
And as a father, I think I don't see myself as a father. We are friends यार. मैं बड़ा ही हमारा रिलेशनशिप बड़ा और वो मुझे बुलाता भी ऐसे ही है कि बाबा बाबा तो ऐसे करके तो he just calls me. So there's a nice. I'm trying to build that relationship. I'm trying to be like a friend to him. Right. He shares everything with me. He's very small right now. He's just 1.5. But yeah, it's divine, yeah. It's something I cannot express in words. That relationship I have with him. My day starts with him. My day ends with him. You know, and for my parents, for Aditi's parents, he's been a blessing for all of us, yeah. And खतरों के खिलाड़ी यार मैंने यही सोच के किया था कि one day he will see and he will be proud of me. Right. And yeah, अभी भी वो देखेगा तो बिल्कुल. और कुछ स्टंट से पहले मुझे हमेशा मैं अपने आप को ये बोलता था कि मैं ये करूँगा बिकॉज आई वॉन्ट हिम टू सी दैट आई डिड इट एंड आई डोंट वॉन्ट हिम टू सी दैट मैं नहीं कर पाया वो. सो लाइक एक तो करंट वाला स्टंट था जो मुझे बहुत डर लगता था, जो मुझे बिकॉज आई एम वेरी यू नो मेरा थ्रेशोल्ड बहुत कम है उसके लिए, तो वहाँ मुझे डर लगता है. लेकिन बाकी जगहों पे लाइक बीट अंडर वाटर, बीट हाइट और बीट वॉट एवर वेर एवर वाइल्ड लाइफ, सांप सूप वॉट एवर, I did it. I was like, I'm going to do it. I don't want him to feel someday that, you know, my dad didn't do it or my dad, you know, डर गए वो. तो वो नहीं चाहता हूँ मैं चाहता था कि वो जब भी देखे, बिकॉज आजकल सब कुछ अभी वूट पे है या हॉटस्टार पे है या सब कुछ है, तो ही कैन एनी टाइम गो एंड सी इट. सो दैट वाज माय ओनली आइडिया कि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मुझे कभी भी डरते हुए देखे, और वो ही शुड बी प्राउड ऑफ मी फॉर वट एवर आई डू राइट नाउ, मे बी एनी कैरेक्टर आई प्ले और यू नो. सो दैट्स वाई आई पुट इन मोर एफर्ट नाउ. पहले मैं एफर्ट तो डालता ही था, लेकिन अभी और ज़्यादा डालने लग गया हूँ क्योंकि अब मुझे और ज़्यादा अच्छा करना है, बिकॉज आई नो दैट ही इज़ ग्रोइंग अप, ही विल सी मी एज एन एक्टर, ही विल सी मी एज ए इंडिविजुअल. सो या आपने एक ऐसी चीज़ बोल दी है इंटरव्यू में जो अगर मैंने इसका रील बनाया है, फिर इसके ऐसे क्लिप्स लोग शेयर करेंगे, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे जिनकी न्यूली शादी है, देखो ये बोल रहे हैं जल्दी बच्चा कर लो. So, आपने काफ़ी पेरेंट्स को होप दे दिया है. आपका वीडियो दिखाएंगे अपने बच्चों को, देखो तुम्हारी शादी हो गई है, मोहित बोल रहे हैं बच्चा कर लो जल्दी. प्लीज़ कर लो यार. ट्रस्ट मी, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बच्चा करो एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू. एंड बिकॉज यार इतनी डिस्ट्रैक्शंस हो गई हैं, इतना यू नो सैनिटी अपनी मेंटेन करने के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी लाइफ में. यू नो बीइंग गेटिंग मैरिड और बीइंग यू नो कंसिस्टेंट विद समवन. और दैट्स व्हाट वेयर सैनिटी कम्स फ्रॉम यार. मैं जितनों को भी देखता हूँ, यू नो आई फील दैट यू नो सेटल्ड फीलिंग तभी आती है जब आपकी फैमिली सेटल्ड है. यू नो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी फैमिली. आपकी फैमिली अगर सेटल नहीं है तो आई थिंक आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी. Once your family, once your everything is, you know, once you've married, once your family is settled, I think that's the base. वहाँ से I think you can do wonders then. अगर आपका फैमिली सपोर्ट अच्छा है, वहाँ फैमिली सेटल्ड है, तो वो बहुत ज़रूरी है. आपकी फैमिली के साथ आपका एक यू नो देयर इज़ अ पीस इन द फैमिली. एक पीस रहेगा फैमिली में तो आई थिंक यू कैन ग्रो इन एनी वेंचर इन लाइफ एंड यू कैन एनी स्ट्रीम ऑफ लाइफ. राइट. तो while growing up या फिर अभी even as an actor now, is there any dream project or any like you know a dream director or actor or writer, anyone that you would want to work with? I like certain directors, like I like Sujit Sarkar's work a lot and I would love to work with him. मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में बोला है कि I want to work with him. देखो, I am manifesting, maybe कभी ना कभी होगा. Roles there, I think any role which is again I'll say that which you know gives me sleepless nights and which you know which doesn't come easy to me, and that should be the character I think what I want to do. And मेरे को ये नहीं है कि यार ये किरदार निभाना है, ऐसा किरदार निभाना है, because I want to just go with the flow. Right. And because as you grow up, as you get matured, I think you become better as an actor. So मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आज मैं वो कैरेक्टर निभा लूँगा, यू नो. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस. लाइक कुल्फी सिकंदर सिंह गिल. अगर सिकंदर सिंह गिल मुझे 4 साल पहले ऑफर हुआ तो मैं इतने अच्छे तरीके से उसको प्ले नहीं कर पाता, मैं समझ ही नहीं पाता उस कैरेक्टर, बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ विजडम इन हिम.
And because the wisdom came into my life as I grew as a human being, I think that's how I could play Sikandar Singh. So that's why I always say that, you know, your growth happens with your age. As an actor, you grow with your age, and that's what is happening. So I want to go with my flow, you know, जैसे जैसे मेरे पास रोल्स आते रहेंगे, अपनी मेरी जितनी क्षमता है, जितनी मेरी एबिलिटी है, उसके हिसाब से मैं रोल्स निभाऊँ. बट मैं ये भी चाहता हूँ कि जो रोल मेरे को लगता है कि 4 साल बाद मैं अच्छे तरीके से कर पाऊँगा, मुझे अभी ना आए. You know, I want that role to come to me at that point of time जब मैं उस रोल को परफॉर्म करने के लिए रेडी हूँ as an individual. Because see, the character come from you, right? And unless you are not grown or matured enough to play that character, it will become fake. तो I think मेरी एक ही, मैं, you know, Aditi also keeps on asking me कि what do you want to do now? मैंने कहा I just want to do whatever comes my way and what is written for me and what is I think this should be the right time for a particular character to come to me. ऐसा नहीं है कि यार जैसे मैंने बोला कि, you know, कि 4 साल बाद कोई कैरेक्टर, मैं क्या पता, you know, अभी मैं जो प्ले कर रहा हूँ वो 4 साल बाद मैं और अच्छे से कर पाऊँ. So I think वो कैरेक्टर को उसी वक्त आने दो 4 साल बाद, और अभी जो मेरे लिए इस एज में, इस मेरे जो माइंडसेट है और मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसके हिसाब से मैं जो प्ले कर सकूं, वो मेरे पास आने दो. वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा. राइट. सो एनीथिंग आप अभी शूट कर रहे हैं या फिर एनीथिंग अपकमिंग? व्हाट्स नेक्स्ट? या आई एम डूइंग अ शो कॉल्ड चमक. इट्स ऑन Sony Live. इट विल कम इन Feb or March. आई एम शूटिंग फॉर दैट. अभी कुछ काम बचा है दिसंबर में. So yeah, that's what I'm doing, and it's been helmed by Mr. Rohit Jugraj. Okay. And yeah, so I've just completed Delhi schedule and Punjab schedule. We're waiting for the Mumbai schedule to start now. Oh, nice. So everyone, you know what to look forward to next year on Sony Live. It's Chamak, and a lot many things that Mohit will do, and I'm sure they're all going to be phenomenal because the amount of effort that he's putting into everything is just it's inspiring, and at the right time he's had his child, so that motivation and that inspiration will be even more for all of us to see. So thank you so much for being here. Thanks, Shlok. And thank you so much. It was great interacting with you. Same. Hopefully Imperial में मिल लेंगे कभी. Done. तुम जब भी शिफ्ट होगे please let me know. Yes, done. Yeah. Thank you. Radio City.